Good morning, everyone. Dr. Ashutosh Bajpayee, sir, HOD MBA, Dr. Namita Mishra, and Dr. Neerav Verma, HODs from BBA department, and faculties, and my dear students. It gives me an immense pleasure to extend to you all a very warm greeting on behalf of Technia Institute of Advanced Studies and privileged to grace the event. Allow me to welcome Dr. Sarneet Kaur. She has been associated with the Bharatiya Vidyapeeth Institute of Management and Research as an assistant professor with vast experience in academic, research, and administration. She has undertaken several projects such as on customer relationship management in banking, C language project on hospital management in O level, and there are many more. And she has also participated in several renowned conferences and published papers. Welcome, ma'am. Thank you Now so I much. request Dr. Sarneet Kaur to share her valuable guidance among our participants. Kindly proceed. Yeah, thank you so much, Inderpreet, for the valuable words. So basically, we are get together here to discuss a workshop on interviewing skills, and all the students have a dream to be successful, dream to be happy, and your journey begins with certain milestones. So there are basically the selection techniques like group discussions and personal interviews. That is your first ice-breaking session, that is known as your job interviews. And many students I have observed that during the initial stage, they became very nervous, right? They are not able to express about their qualifications, about their strengths, weaknesses in that particular 5 minutes time. But after this workshop, I hope I'm able to justify this topic. And let's begin. A job interview is not a test of your knowledge, but your ability to use it at the right time. Irrespective, आप इंटरव्यू के लिए कितना भी प्लान करके जाइए, बट इम्प्रॉम्प्टू आपका इंटरव्यू जैसे प्लान है वैसे कभी नहीं जाता. दिस इज अ फैक्ट, ओके? Because the questions are like a surprise from the interviewer, and you cannot read the mind of the interviewers. So that's why I'm adding this quote. A job interview is not a test of your knowledge, but your ability to use it at the right time. That means when the interviewer, see, interviewer is a person who is asking you certain questions and you are the interviewee, okay? You are the applicant there. Generally हम कहते हैं कि employee interview देने गया है. No, that's incorrect. The right phrase is that the applicant has gone for applying for the interview. You're the applicant because still now you're not selected. So basically use proper jargons and the words. So let's begin. Let's have a quick overview of my workshop. In today's session, we'll discuss about the interview definition and skills, the self-discovery, interview skills, your non-verbal communication, how your personality mapping should be there, the 7 C's which are very important during that particular phase of an interview time, the importance of communication, your body language, how body language plays a very pivotal role during the interviews because your interview is judged through your body language as well. And your basic listening skills, because in an interview, you need to be a good listener as well. So let's begin. Firstly, in the initial stage, let's begin with the interview definition. An interview is essentially a structured conversation. Why we are stressing on structured here? Because it is a formal conversation happening. And both the parties have been prepared for it and they want to achieve a certain goal that is known as recruitment and selection process, where one participant asks questions and the other provides answers. To be very clear, the one who is asking question is known as interviewer and the one who is providing the answers is known as interviewee. The interviewer asks questions to the interviewee and the interviewee responds, usually provide the information what the interviewer need to ask. And see, it's not about just preparing as an interviewee. As an interviewer भी कभी-कभी आपको prepare करना पड़ता है because you want to recruit a right personnel for the right job and at right place in the organization. So this feature is very much clear to you about the job interview. It's a basic introduction and let's begin. During the interview skills, the interviewer expects certain, they have, a preconception or a notion about the applicant and for which particular post you're applying, right? So let's begin with the skill. Initially, the first one and very first key is that preparation.
As an interviewee, the interviewer expects you to be carefully research about the job, right? About reading the job description, industry, and the employer. Your proper answers to likely questions need to be straightforward instead of exaggerating the answers. The second point is you need to dress very smartly. In an interview, your personality showcase your talent, your personality showcase who you are. So show your interest, internet in the job and commitment. Your body language, smile is a very nice gesture and make eye contact. Shake hands if it is required, a firm shake hand if it is required. And eye contact, it should not be gazing. घूरना नहीं है आपको और बहुत ज्यादा विंकिंग भी नहीं करना है. तो ये आपको अपने बॉडी जेस्चर्स इंटरव्यूज में बहुत ध्यान रखना है. द सिटिंग पोस्चर, द वे यू ड्रेस अप फॉर गर्ल्स, नो लाउड मेकअप. फॉर बॉयज, प्रॉपर हेयर कट, योर टाई, योर बेल्ट, your shoes, it plays a very pivotal role in your personality. See students, the very triggering point is that the moment you enter the room, half of the selection is done through your body language. This is true. The interviewer judged through your personality, your body language. But obviously your personality matters, but your content, your knowledge is the supreme power. You can win the hearts with your knowledge. That's why I said preparation is very, very important. When you're going for an interview, read about the job description, why you want to apply it, read about the company, research about the company, right? So that in case they ask you what you can contribute to the organization, you're aware about their turnovers and everything. The fourth point is your question about your CV or application form. So basically your personal desire, you can call it curriculum vitae or you can call it resume. The description about yourself. Make sure you're not adding any point which is not valid to you. Just to impress the interviewers, no, it's not required. Be logical, be smart, and be authentic with your CV. CV writing is also an art. And don't make it to like 8 to 10 pages, or you're carrying basically a stereotype that long pages of your CV will showcase that, oh wow, so many qualifications and so many is that. Try to be more concise and precise in your CV, okay? Because interviewer time is also precious. The fifth point is have questions to ask, like what training would I receive? What is the typical career path in the job? See, initially you will not ask questions to the interviewers, but later on when you will see that, yes, I'm going to be selected. So you have a, particular excitement in the initial phase that what I'm going to learn this in this company as well. Not only the interviewers are having some aspirations, the interviewee also having few aspirations from the company, where you would like to see me after 5 years. Tell your USP. USP is your unique selling proposition, or you can call it unique selling points. The skills, the attributes, the qualities which are inbuilt here, try to showcase in an interview. Try to be, empathy hona chahiye, patience hona chahiye, prompt reply hona chahiye, and try to listen. Be a good listener in an interview round. Because अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप pre-assumption करोगे तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. Fine. The next point is hypothetical questions. Like they will give you a certain, like if you're applying for a sales manager job and they will give you, a scenario. You're working in Vijay Sales, you're working in Chroma, and you're dealing with a very irritating customer, a staff member who was caught stealing. What you will do at that particular time? Like I said, that the job interview is like a test. It's about your knowledge and ability which you are using at the right time. So in that particular situation, how you will act? Okay, so that is more important. The next one is competency questions. Competency questions can come up with from the interview part. Describe a situation where you worked in a team and so much pressure was there, how you will act in a certain way, what kind of synergy level you will create among the team, what can you contribute for the organization. So these are the points which inherit with interview skills, and you need to concentrate these points when you are applying for a particular job. Let's go step by step. Okay. Let's see the do's first. Definitely, students, whenever you're applying for any kind of interview, you need to do preparation months in advance. Okay? ये नहीं कि आपको रात को कॉल आया, आपने रात को ही अपना CV डिजाइन करा और लेट नाइट किया, एंड आपने अपनी लोकेशन भी ब्राउज नहीं करी, you're reaching not on time. So it will create a kind of negative impression. Okay?
तो ट्राई कि आप अपना जो प्रिपरेशन है वो 1 month in advance में ही स्टार्ट कर दें. The second point is refresh and update your knowledge of the subject started in the graduation and post-graduation. In case they ask you any questions related to your graduation or post-graduation, you should be updated with the latest knowledge. Be aware about the latest technologies and business ideas, various models related to your specialization, because definitely they will ask you certain questions like this, okay? Talk to your references before the interview. Yes, in your CV, you need to add 2 to 3 references, your referrals that showcase your authenticity. Just speak to them that I have given your reference in case you will get a call from any company. So they know about that, okay? Keep your desire of documents ready at least a day in advance. Definitely your documents in chronological order. Start from the earliest. और आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, यू नो इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. अगर कोई इंटरव्यूअर आपकी फाइल भी देखे, वो आपकी फाइल से आपको जज करेगा कि व्हाट अ फाइल, मतलब कितना एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपको काम कर रहा है. And you know the management principles. What management principles say? Planning, organizing, staffing, directing, controlling, right? And budgeting, reporting, recording. Now it's further. But what is organizing? So you are presenting your file. If it is disorganized, how can you perform in the organization? So you need to be more organized in your documents. Okay. The last point is research about the target audience. As I told you, always research about the organization you're applying. You're just not randomly, entering an organization that you're not aware about, like which turnover, who is the director, in which brand they're dealing. So you should be aware about all that. These are the few don'ts about the pre-interview. That means never ever postpone your preparation till you get a call. Prepare till late in the night on the day preceding the interview. Definitely अगर आप रात तक जागोगे, एक freshness नहीं होगा आपके चेहरे पे, आप panic करोगे morning में. And also it's a very small thing, but make sure जो आपका interview का venue है, वो आप one day prior कहीं ना कहीं locate कर रहे हो properly. अगर आपने plan करा हो कि I'll go by metro. अगर आपने छोटी सी चीज प्लान कर ली है और देखा है कि ये लोकेशन है, बट देयर आर 3 लोकेशंस आर देयर जो मैं रास्ता अपना सकता हूँ, एंड दिस वन इज द सेफेस्ट. तो थोड़ा सा अगर आप इंक्वायरी करेंगे, यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर रीचिंग मिनिमम 1 hour or 45 minutes before the interview time, so that you can settle down, you can just go through with your documents and be relaxed. In a panic situation, you will enter and the HR coordinator will say your turn is there, you will panic. You're not able to perform your best. So inquiring about, yes, we should also avoid inquiring about, other applicants, about their interview experience. Instead of asking, जब वाइवा होता है आपका जनरली BBA MBA में, आप बच्चों को क्या क्वेश्चन पूछा, जब आपकी टर्न आई तो वो क्वेश्चंस थे ही नहीं. It's like a surprise. So you cannot judge, by like you cannot judge through other feedback. Just prepare yourself, just be confident, and let the poor performance in the past, let's not shake your confidence for the future. क्या होता है कभी कभी हमारे कुछ इंटरव्यूज, एवरी इंटरव्यू, आई एम गाइडिंग यू वन थिंग, मैंने 50 इंटरव्यूज दिए होंगे और 100 इंटरव्यूज लिए होंगे, बट 50 इंटरव्यूज में एवरी इंटरव्यू में मैंने एक नई चीज सीखी. दैट मीन्स आपका पुअर परफॉर्मेंस हुआ इंटरव्यू में, दैट इज मेकिंग यू मोर बूस्टर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि आप अपने जितने भी कमियां हैं उसको हर इंटरव्यू में डिलीट कर रहे हो. तो आई सजेस्ट यू गो फॉर एवरी इंटरव्यू इररिस्पेक्टिव, जस्ट गो फॉर मॉक इंटरव्यूज सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. फर्स्ट इंटरव्यू में आप देखो कि मेरी फाइल ऑर्गेनाइज नहीं थी, मुझे इंटरव्यूअर ने टोका, मैंने ऑर्गेनाइज करी. सेकेंड इंटरव्यू में मैंने ये नोट किया कि मैं टाइम से नहीं पहुंचा, आपने उसको एलिमिनेट किया. थर्ड इंटरव्यू में आपने ऑब्जर्व करा कि मुझे और फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो और एप्लीकेंट्स आए थे दे वर सो फॉर्मली ड्रेस्ड, राइट? सो इन एवरी इंटरव्यू यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग एंड यू शुड inculcate in yourself. Go for interviews. Don't let the poor performance in the past shake your confidence for the future. And be not, see, confidence is fine, but not being overconfident. It should not showcase a kind of, a pleasure or arrogance on your face. Okay? This is a very important thing. It is self-discovery through self-questioning. Basically, in this,
This is a kind of exercise, students. Whenever you are going for an interview, before that, try to record yourself for 10 minutes in your Androids or iPhone or whatever mobile phone you're having. Just 10 minutes record yourself. Just see when I'm speaking, is there any word I'm not able to articulate, or is there any word जो मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या मैं बहुत pauses ले रहा हूँ बात करते हुए. सेल्फ डिस्कवरी थ्रू सेल्फ क्वेश्चनिंग मीन्स जब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, व्हाट आपने सुना होगा, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मैपिंग करते हैं. ओके, यू आर डूइंग अ सेल्फ डिस्कवरी थ्रू सेल्फ क्वेश्चनिंग. So considering your strength, and you can also do observational research in that. You can ask your family and friends to observe you and tell your loopholes, आपकी weakness आपको बताएं, so that you can overcome. हो सकता है आप नॉर्मली नर्वसनेस में बहुत ज्यादा आइज ब्लिंक कर रहे हो, तो वो आपको बोलेंगे कि आप अच्छे से बात कर रहे हो बट आपकी आइज बहुत ब्लिंक हो रही है, तो आप उसमें नोटिस करोगे. ओके, तो जस्ट फॉर 10 minutes रिकॉर्ड योरसेल्फ, सी व्हेन यू आर टॉकिंग हाउ इट लुक्स. क्या मैं बहुत ज्यादा अपना माउथ वाइड ओपन कर रहा हूँ या बहुत कम बात कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत पॉजेस ले रहा हूँ, मेरे स्पीच में जो मेरी वॉइस है, वॉल्यूम है, intonations, you know the meaning of intonation, that means raising your voice high or low, that is known as intonation. तो अगर आप बहुत तेज बात करोगे तो आपका हाई इंटोनेशन होगा, अगर आप बहुत धीरे बात करोगे तो लो इंटोनेशन होगा. So when you're motivating someone, high intonation is required. And when you're talking in a held down manner, fine, the normal intonation is there. In an interview, you will not speak like an army person. Okay? So just do a self discovery through self questioning. और मैं आपको गारंटी करती हूँ, जब आप अपने आप को 10 minutes रिकॉर्ड करोगे बच्चे, you will see the difference within yourself. Okay? And you will try to eliminate few weaknesses within yourself. Always make a strong start. This is very, very important. 99% times we know that in an interview session, they generally ask you, tell me about yourself. So go for it. Tell me about yourself के बारे में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. ओके, आप अपना 100 या 200 वर्ड्स का एक बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज अबाउट योर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए. स्टार्ट विद द क्रोनोलॉजिकल और नॉर्मल ऑर्डर, ताकि व्हेन दे विल आस्क यू, यू नो, आई हैव टू डिस्क्राइब इन सच अ मैनर. Reflection in the mirror, non-verbal communication. These are the points which you need to consider. Definitely non-verbal communication. I hope you're very much clear about verbal and non-verbal communication. Verbal communication are the spoken words and non-verbal communication are your gestures. So appearance, let's concentrate on the appearance. Casual dressing, unhygienic looks should be avoided. इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, मतलब आपके अंदर एक लेथार्जिक फीलिंग नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट, है ना, लैक ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज योर वॉइस. टोन में आपको ये भी नहीं कि अगर मैं आपको अब इतना धीरे पढ़ाऊंगी तो आपको अगले 2 मिनट में नींद आ जाएगी और हम ऐसे लग रहा है कोई योगा सेशन कर रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि एक टोन से कितना प्रभाव पड़ता है, राइट? इंटोनेशन, मैंने आपको बताया, हायर एंड लोअर द वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं इंटोनेशन. अगर कोई चोर आपका पर्स चुरा के भागेगा तो आप ये नहीं बोलोगे चोर चोर चोर, अब आपका इंटोनेशन ऑटोमेटिकली हाई जाएगा. ओके, तो पिच ऑल्सो मैटर्स, योर वॉल्यूम. अनएक्सपेक्टेड साइलेंस भी नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में. एकदम से अगर आपको कोई नई चीज पता, आप क्लियरली बोलिए. द हॉल्टिंग और हेजिटेंट फीलिंग नहीं होना चाहिए. फीबल नहीं होना चाहिए. फीबल का मतलब होता है बच्चे विद नो एनर्जी और पावर, एक तरह से एक वीकनेस होना. मे बी आर नॉट वेल, सो यू आर फीलिंग लिटिल फीबल. ओके, जो आपकी वॉइस है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए. अभी जस्ट सी, वी आर इंटरैक्टिंग, यू आर नॉट एबल टू सी मी बट you are listening to my voice, right? So voice plays a very important role. The third one is your facial expressions. Your facial expressions should not showcase a kind of tense feeling. थोड़ा nervousness इंटरव्यू में होना नॉर्मल है, बट बहुत ज्यादा टेंस भी नहीं. स्वेटिंग, डिसइंटरेस्टेड, मतलब वट एवर इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है तो आपके मन में चल रहा है मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे इस इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, बट ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए. ओके. फोर्थ इज योर आई. गेजिंग ब्लैंकली का मतलब होता है एक तरह से घूरना, कि इस इंटरव्यूअर ने मेरी बेइज्जती करी तो मैं इसको घूरता रहूंगा. लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट भी नहीं, बिल्कुल शर्माना भी नहीं नीचे देख के कि वो जो पूछ रहा है और आपकी आईज नीचे ही है.
सो नॉर्मल एक आपको सिनेरियो क्रिएट करना है जिसमें आप दोनों कंफर्टेबल हो, राइट? द मेन एम इज टू रिक्रूट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. दैट इज द मेन एम. That's why the organization has organized this interview. So let's keep it in that way. Handshake. As a interviewee बच्चे आप कभी भी एक तरह से ना ऑफर मत करिए हैंडशेक. Wait, if the interviewer is asking you या फिर offering you, in that case you can ask. The next one is your postures. Postures में आपका slouching, folded arms. Slouching का मतलब होता है stand or walk in a lazy way. आप जाके बैठ गए कुर्सी पे आराम से बैक में होके लाइक इन गोवा बीच, सो दैट इज नॉट अलाउड. फोल्डेड आर्म्स भी नहीं करके आपको बैठना, दैट शोज डिफेंसिव पोस्चर. आपका हर नॉन वर्बल जेस्चर आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, लाइक स्क्रैचिंग अगेन एंड अगेन ऑन योर नोज, मे बी शो कि आप नर्वस हो, राइट? क्लेंच्ड फिस्ट, मुट्ठी बंद करके बैठ जाना कि अगर इसने मुझे रिक्रूट नहीं करा तो एक जाते हुए पंच दे दूंगा इसको, ये भी नहीं होना चाहिए. ओके, क्रॉस लेग्स करके बैठना, लीनिंग बैक इन द चेयर. एंड जो आपके पास फाइल है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो भी आप उनसे बिना पूछे उनके टेबल पे नहीं रखेंगे, बिकॉज दैट्स देयर प्रॉपर्टी, राइट? इफ यू आर टेकिंग परमिशन एंटर करने के लिए तो आपको हर चीज का एक परमिशन देना है. जेस्चर्स, योर अनयूजुअल हैंड मूवमेंट्स आर देयर, फिडलिंग विद द पेन को ही आप शेक करते रहोगे, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड. तो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ आपको नॉन वर्बल जेस्चर्स पे भी ध्यान रखना है. इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है. अ गुड हैंडशेक शुड बी देयर. एक हैंडशेक करने का भी प्रॉपर वे होता है. ये नहीं कि आप दूसरे बंदे को पंजाबी स्टाइल में पूरा हिला दो, ये भी नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड बी अ फर्म हैंडशेक. Pronounce the interviewer's name properly, and sometimes it's not required to pronounce the interviewer's name, but sometimes it's required. So get the interviewer to do a lot of the talking. Just listen what he needs to ask, what he or she needs to ask, what are the expectations, and try to be sure, precise when you are saying something. Maintain good eye contact with the interviewer. Smile. Yes, it's a very lovely gesture. Smile. Have a confident posture. Mirror your interviewer's body language. Keep your all answers positive. Show enthusiasm. एक excitement show करिए. Listen carefully and ask the interviewer questions when the opportunity arises. Okay? जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके भी कुछ questions हैं related to salary expectations, वो आपका थोड़ा सा initial stage पे हो जाए. Initial मतलब mid stage में होता है. Initially you don't ask एकदम से for salary expectations. सेल्फ असेसमेंट एंड पर्सनालिटी मैपिंग, ये आप इंटरव्यू से पहले ये 5 चीजों का ध्यान रखेंगे. बेसिकली हु इज योर ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स आपके इंटरव्यूअर्स कौन है और वो वहां पे क्यों बैठे हैं आपको रिक्रूट करने के लिए. आपका गोल क्या है एज ए इंटरव्यूई कि आपको वो जॉब लेनी है. हाउ लॉन्ग इट विल इट बी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू. वेयर विल इट टेक प्लेस, ऑनलाइन सेशंस, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, फेस टू फेस, इट डिपेंड्स. तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट और पर्सनालिटी मैपिंग करना जरूरी है. प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हम आते हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड इंटरव्यू स्किल्स आर कोरिलेटेड. ये 5 थिंग्स आपको ध्यान रखनी है. एनालाइज करना है. एनालाइज क्या करना है आपको, अपना इंटरव्यू एनालाइज करना है, राइट? व्हाट क्वेश्चंस दे कैन आस्क, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, डू आई नीड दिस जॉब. इफ यू नीड समथिंग स्टूडेंट, यू विल गिव 100%. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. बिल्ड का मतलब क्या है, बिल्ड अ रैपोर्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप. ओके, आपको एक रैपोर्ट क्रिएट करना है और अच्छे से हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं. कंसिडर करना है. कंसिडरेशन शुड बी देयर. Design your CV and resume in such a manner to impress them, and it should be authentic, not you just writing for the sake of getting the job. And execute means let's go for it. I will do it. Just carry a positive image in your mind. मम्मी को बोलो मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले दही खिलाए. Yes, these things really matters. It inculcate positive vibes in your mind, right? So definitely carry a good positive approach before going for an interview. Be positive. I'll discuss 7 C's of effective communications during interview, and I guarantee you, अगर आप ये 7 C's ध्यान रखेंगे बच्चे, तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन में, ये नहीं मैं बोलूंगी, कम्युनिकेशन आपका जो होता है वो प्रैक्टिस से ही आता है. ओके, कम्युनिकेशन इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस. कम्युनिस मीन्स टू शेयर योर आइडियाज एंड थॉट्स. तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएगी. द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल प्रैक्टिस, राइट, योर कम्युनिकेशन विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. So these are the 7 C's.
7 C's मैं आपको बताऊंगी जिसका आपको ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू में। सबसे पहला C है कंप्लीटनेस। कभी भी आप इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर के सामने अपना कोई भी अपना आंसर रखते हैं या कोई अपनी क्लैरिटी या अपने अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, अपने बैकग्राउंड के बारे में जब भी एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट रखना है। इट शुड कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। ओके, कंप्लीट कम्युनिकेशन अगर होगा तो इंटरव्यूअर आपकी जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप थॉट्स, वो क्लियर कर पाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। अगर आप हर आंसर कंप्लीट नहीं दे रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन एंड इट विल नॉट परसुएड द इंटरव्यूअर टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस। तो ये आपका एक डीमेरिट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पूछ रहा है उसको आपको कंप्लीट फॉर्म में आंसर करना है। The second one is conciseness. Conciseness means wordiness. आपको जब वी मेट में करीना कपूर की तरह भी बात नहीं करना और ना ही शोले में बसंती की तरह। इतना अगर आप बोलोगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। यू शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में आपको अपनी बात को समझाना है। आई एम रिपीटिंग, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में आपको अपनी बात को समझाना है, क्योंकि उस इंटरव्यू सेशन में इंटरव्यूअर का टाइम भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूई का टाइम भी इंपॉर्टेंट है। So it is both time saving as well as cost saving. That's why we need to be concise and precise when we are speaking to someone. और concise message का मतलब क्या होता है? Non repetitive in nature. एक चीज को आप ये नहीं कि बार बार रिपीट करे जा रहे हो। तो concise communication में आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, it should be short, और आपका जो essential message है वो ही आप अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हैं। The third C is consideration. कंसिडरेशन का मतलब होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स एंड देन यू आर टॉकिंग। ओके, ऑडियंस यहाँ पे आपकी कौन है? इंटरव्यूअर्स। उनके व्यू पॉइंट्स, उनका बैकग्राउंड, उनका माइंडसेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू चल रहा है एंड दे आर सेइंग दैट दिस मार्केटिंग जॉब रिक्वायर्स फील्ड जॉब, तो आप एकदम से ये नहीं बोलोगे कि अगर आपको उसी बच्चे जॉब की नीड है, देन यू विल से यस सर, आई एम रेडी टू डू फील्ड जॉब। इट डिपेंड्स ऑन योर नीड. So consideration means you are emphasizing on the interest of your interviewer. You're stepping into the shoes of the interviewer, right? You're talking in terms of the interviewer. And definitely in an interview, I'm not saying कि आप हर चीज interviewer से agree करो, but अगर आपको कोई job चाहिए तो maximum terms में आपको agree करना पड़ेगा. Fine. The next one is your clarity. Clarity is very, very important. Like I'm speaking to you, I'm using both Hindi and English, and we know that when जब हम हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके बात करते हैं, the understanding is more clear. It's very basic. So clarity is emphasizing, on a specific message or goal at a time. And in an interview, avoid using so much of jargons and technical words. अगर आप इतने jargons और technical words use करोगे, तो clarity नहीं हो पाएगा. What is communication? When the sender is encoding a message and the receiver is decoding it. And once the receiver is giving the feedback, it is ensured that the communication cycle is completed. Okay? So it makes understanding easier. Clarity should be there. Clarity of thoughts, ideas enhances the meaning of the message. Okay? Clarity में आप concrete word use कर सकते हैं. Instead of just, exaggerating a word, try to use logical words. Fifth point is your concreteness. Concreteness जनरली implies जब आप अपने किसी भी डाटा को सपोर्ट करते हैं किसी फैक्ट्स या फिगर्स के साथ. अगर मैं डेंगू पे या किसी भी आपके फ्लू के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, किसी भी गांव में जाके उनको जागरूक करना चाहती हूँ, तो मैं उनको प्रेजेंटेशन देते हुए बता सकती हूँ कि हाँ 2020 में डेंगू के केसेस इतने थे और इस साल डेंगू के केसेस कम हुए हैं. ओके, तो मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स से सपोर्ट कर रही हूँ. तो इससे क्या होता है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो कॉन्क्रीट हो जाती है. बट इंटरव्यूज में आप अपनी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को कॉन्क्रीट कैसे करोगे, स्ट्रेंथन कैसे करोगे? एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू पे ट्रस्ट या होना चाहिए थ्रू योर सीवी, राइट, थ्रू योर मार्कशीट्स. योर डॉक्यूमेंट्स, योर डिजायर are the facts and figures of your personality. That's why I said before applying for any interview, try to maintain a proper record of all your documents so that the interviewer can scan it, very easily. The sixth C is your courtesy. Courtesy should be there, students.
We should learn courtesy from Japanese people, the way they bow, the way they respect, हाथ जोड़ना, greet करना, social WhatsApp language को avoid करना, right? Let's meet ASAP. No, you should not use all these jargons when you're talking to them. There should be a polite and judicious and reflective manner of your personality. Respecting or biasness नहीं होनी चाहिए. Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feelings of the giver of the message. Courteous message का मतलब क्या होना चाहिए? मतलब एक courteous remark होना चाहिए. Yes sir. If the interviewer is talking to you or saying yes sir, हाँ जी sir, just nodding. मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा अपना face या shake करो. A small nodding is required. That means yes, the interview is listening to the interviewer thoughts and feedbacks, and you are agreeing on that. Interviewer आपको कुछ कह रहा है और आप उसको घूरी जा रहे हो, तो इंटरव्यूअर को बहुत अजीब फीलिंग आएगी कि आई एम गिविंग हिम फीडबैक एंड he's just staring me. So try to give a prompt and courteous remark when you are in an interview round. Okay. The last C is your correctness. Correctness, as I always told you, just to make a good impression, don't add anything fake. Fakeness will not, it will not be survive for a long period of time. Be logical, be authentic in your CV. ये नहीं कि आपने percentage भी बढ़ा दिया अपने CV में. No, everything is being checked. HR, human resource department is there to scrutinize and check the fairness of your accounts. So auditors are there. So be logical. The message should be exact, correct and well timed. कम्युनिकेशन में इंटरव्यूज में आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरव्यूज पे कि नहीं, राइट? आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से ही सपोर्ट करना है. एंड लास्टली करेक्टनेस में इट मेक्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज. ओके, दीज आर द 3 इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैं स्ट्रेस करूंगी मोटिवेशन पे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे और सोशलाइजिंग पे. So communication promotes motivation by information and clarifying. Yeah, per sabta, I'll share the PPT with you. I'll stress on the body language also, as I told you, that the conscious and unconscious movements and postures by which attitudes and feelings are communicated. One thing you have to realize, students, when you're applying for a particular job, nobody is experienced. हर इंसान का फर्स्ट टाइम होता है. एज ए आपको क्या पता जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है क्या उसका भी एज अ फर्स्ट टाइम है एज एन इंटरव्यूअर. ओके, तो आपको ये प्रूव करना है कि yes sir, I am at a learning stage right now, introduction stage right now, and I will do my best. And definitely trust me students, just be fair with your words. They will give you the opportunity. Everybody is not trained, everybody is not experienced. The more you will practice, you will become expertise in your field. Body language is what? These are the non-verbal communications, right? Body language में मैं आपको इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब इंटरव्यूज लिए हैं, बच्चों के percentage are good, but they don't know how to behave well in an interview round, right? It is very abrupt when I see this. So body language, आपके gestures, eye movements, touch, space, कि जब हम 2 लोग बात करते हैं तो 1 arm distance रखना चाहिए, ये सब चीजें. And because of this pandemic and COVID situation, we should maintain good social distance. And body language को हम kinesics भी बोलते हैं. Kinesics का मतलब होता है the study of body movements and gestures. I'm repeating, kinesics. Kinesics का मतलब होता है जो body movements और gestures की हम जो पढ़ाई करते हैं, study करते हैं, उनको हम kinesics भी बोलते हैं. Let's have few examples. See, there is a kind of fear, contempt. का मतलब you don't deserve any respect. Contempt का मतलब होता है ना, कुछ employees सोचते हैं कि मैं आपको respect नहीं करता and all that. Disgust, feeling होना, anger, sadness, happiness, surprise. तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके इंटरव्यू राउंड में. अगर आपका ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस इंटरव्यू में अगर झलकेंगे, जस्ट इमेजिन द फीचर ऑफ योर इंटरव्यूअर. So you need to be prompt in your facial expressions, your eye movements, your lip movements, your kind of your gratitude, and जो भी मैंने 7 C's आपसे डिस्कस करे जिसमें एक C था courteous remarks देना. तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं. And just imagine if you're making this kind of face in an interview, definitely the interviewer will not have a good impression about you. So that's why I'm stressing on the body language part here. Your body language plays a very pivotal role when you're expressing yourself in an interview round. So control your gestures, students, control your personality,
and the way you know, apply in an interview. There's a new term of speech articulation. Speech articulation means the expression or the ability to express thoughts and feelings by articulation sounds. जैसे हम बात करते हैं उसको बोलते हैं स्पीच आर्टिकुलेशन, द एक्ट और मैनर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पीच. अगर मैं आपको एकदम से बोलूं कि आप 1 मिनट इंग्लिश या ब्रिटिश एक्सेंट में बात करिए, तो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ स्पीच आर्टिकुलेशन. तो हम नॉर्मल बात करते हैं, इट्स फाइन, बट व्हेन वी हैव अ, you know, adding a certain kind of accent utilization in your speech. So always when you're appearing for an interview, please concentrate on the articulation part. Just that's why I stress that you need to record yourself for just 10 minutes and see your video, that where you're lacking, what is your USP. Always show your passion for the interview, right? You should be enthusiastic, you should be excited about the interview. Okay, sorry, yeah. A small gesture is also required. Are you able to see the screen, students? There's some problem. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yeah, okay, fine. So, yes, as I told you, a prompt smile is also required. So try looking at individuals rather than scanning at the group. In an interview round, it's not mandatory that there is one-to-one connection is going on. It can happen that there are 8 to 9 interviewers and one interview is there, right? The question can come from anywhere. So you need to be very cautious about this. So try looking at individuals rather than scanning the group. Since you are using a computer, you never need to look at the screen behind you. So just glance down at the computer screen briefly. That means maintaining a good eye contact. Don't forget to smile as well. Fine. And smile, definitely it can bring a very powerful thing. So, as I stressed in the initial part, that in an interview, you need to concentrate on basic listening skills. So, these are 3 points which we need to concentrate. That is your tone of voice, your word content. So, let's read about the tone of voice. Remember, 85% of verbal communication happens through our tone. So, your tone needs to be more prompt and, you know, conservative, not too loud. And the next one is a good listener will listen for verbal clues from the caller. जो आपके interviewers हैं, आपका जरूरी नहीं कि आपका हमेशा face to face interview rounds हो. It can happen on your telephone as well. And due to this pandemic situation, through video calls, your interviews are happening. So you need to be very cautious and firm during the interviews round. Word content, yes, it's very important, and rate of speech. Word content is your words which you are using. You need to be very, very firm on your words. You should not use any kind of word which is, you know, offensive. And rate of speech, आपको बहुत स्पीड में भी बात नहीं करना और बहुत स्लो भी बात नहीं करना, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप खुद अपने जब एक्सप्रेस करोगे आप जल्दी थक जाओगे. So maintain a good rate of speech in that when you're speaking to the interviewers. These are the 3 don'ts which you need to consider. Just 1 minute, there is some problem in the slide. Yeah, never ever interrupt. When the interviewer is asking you any kind of question, please be a good listener. Okay, don't interrupt in between. Finish, analyze the question, what the interviewer is likely to ask you. Don't pre-assume the question. Otherwise, you will end in answering the wrong part. Don't finish an interviewer sentence. Don't pre-assume it. Fine. These are the body language examples which I have shared. For example, arms crossed in front of the chest. These are the 10 body language examples which you need to, you know, avoid generally in case of interviewers, and it will create a kind of, you know, negative environment. तो हर चीज का मैंने आपको मीनिंग बताया हो. जैसे आर्म क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट का मतलब क्या होता है? इट शोज अ काइंड ऑफ डिफेंसिव डिसएग्रीमेंट विद द ओपिनियंस. Biting of nails. I have seen many applicants which are biting their nails during the presentations, during the interview round. To try to avoid that because it shows nervousness, stress, and insecurity. Please visit examples. The third one is hand on cheek. Hand on cheek shows that lost or deep concentration, like you are just, you know, maybe you're nervous and you're doing such actions, finger tapping or drumming,
touching the nose, as I told you earlier also, brisk rubbing of the hands, placing fingers tips together. You're just, keeping your hand on the table and just shaking it, stroking the chin or beard. These are the normal gestures which you need to control during the interviews round. Catapult posture means a relaxed attitude, as I told you, like in, a beach you're sitting. So try to concentrate and your action speaks louder than your words. So always consider your personality showcasing during the interview rounds. Concluding, just these are the common barriers. What are the common barriers? As I discussed, please don't use so many jargons. Emotional barriers and taboos are there. Don't judge people by the religion. Okay, don't carry such attitude because you are educated. Lack of attention is there. Difference in perception of viewpoint. Don't argue during the interviews. Okay, maybe you find something abrupt in an interview. ऐसा होता है आपको इंटरव्यू की कुछ बात पसंद नहीं आती. But student, remember, you cannot agree everybody. Everybody have their own perception, their own viewpoint. हर कोई अपने एक environment से perceive करता है चीजें through their nurturing. So you cannot make everybody, understand with your perception. किसी की physical disabilities है, कुछ भी problem है, speech difficulties है, उसको respect करना, समझना. थोड़ा सा फिजिकल बैरियर्स का ध्यान रखिए, अपना फोन साइलेंट पे रखिए, लैंग्वेज बैरियर्स का ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए. ओके, एक स्टीरियोटाइप कैरी मत करिए कि इस कंपनी के लोग ऐसे ही हैं. कल्चरल डिफरेंस मत लेके आइए. एज आई टोल्ड यू, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड कल्चर. So concluding, a skilled interviewee must be aware of all these barriers and try to reduce their impact by continually checking and understanding by offering appropriate feedback. I repeat, कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे, जो आप इंटरव्यूज हैं, जो इंटरव्यू देने गए हैं, उनको ये सारे बैरियर्स को अंडरस्टैंड करना है. मेन इंटरव्यू का मकसद यही है कि आपको अपने थॉट्स, अपना जितनी अचीवमेंट्स है उसको एक्सप्रेस करना है एंड ट्राई टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट बाय कंटिन्यूअली चेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय ऑफरिंग एप्रोप्रिएट फीडबैक. ओके, so just concluding and finishing my PPT, God has not promised skies always blue, flowers strewn pathways all our lives through. God has not promised sun without rain, joy without sorrow, peace without pain, but God has promised strength for the day, rest for the labor, and light for the way. And use that light, okay, and be a very good shadow of your life. Thank you, students. Thank you so much for being a very good listener and being a patient listener. I would like to welcome your queries related to the presentation. Students, if you have any doubt or query, if you want to ask any questions, so you go ahead, you can raise your hand and then I'll unmute you guys. Okay, one student asked about your PPT. I mean, he wants your PowerPoint presentation. Yeah, sure. I will definitely share. I would love to share with all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Anybody, any doubt, any practical experience which you have shared? It will act like a guide for you, this PPT, but the more interviews you will give, it will become, it will eliminate your weaknesses. Okay, when one student asked one question. Yes, sure, ask me. I would be telling on his behalf. So he asked me, what are the two things which are vital for the interview session? I mean, what the things they need to take care in their mind regarding the interview session? I mean, when they step into towards the interview, so what two things they should keep in their mind? First of all, whenever you go for an interview, remember that in corporates, under the HR department, the first and initial copy is your CV and your curriculum. तो आपको अपना CV राइटिंग बहुत परफेक्ट रखना है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमिनेशन आपके CV को देख के ही हो जाती है. और दूसरी चीज, अपनी फोटो जो आप लगाएंगे वो अपडेटेड होनी चाहिए, नॉट योर 12th और 10th फोटोग्राफ. Okay, your CV should be very updated and it showcases your personality. And second thing I always stress is your body language. Okay, your personality and the way you present yourself. It should be you. Don't just अपने आप को इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए you are just showcasing in such a manner and you are providing fake records. It's not appreciated. Okay, they will provide you training. You apply in Tata, they will provide you training for 2 years. But be logical, be truth. Be true to your work. Okay. Any other question? And please, students, एक last चीज,
इन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज आप जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही बात करो, ओके? जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो अपने आइडियाज को उसी लैंग्वेज में शोकेस करिए, बिकॉज there is a stereotype, there is like a pre-assumption notion in your mind. If I'll speak in English, I'll create a good image. It's not like that. Be natural, be harmonious, be confident, irrespective what language. You can tell in advance, sir, I'm comfortable in this language. Your knowledge do matters. Yes, I'm not saying not speak in English, but do speak in English. But Hindi also you can use. It's not mandatory that you have to give in English only. There's no such guidelines. So be confident in which language you are. Yes, Indrapreet? Okay, so he's asking that as we want to get better in these skills, what you have told in your session, so he need to improve the skills. By what chances he can get to improve these skills for getting rejected in an interview? I mean, if they are getting rejected in an interview, so what are the skills they need to improve when they want to convert their process from rejection to selection? You need to find out, Chirag, कि आप reject क्यों हो रहे हो. And rejection is also good. Don't take it negative. Maybe you're not able to meet the employer or the interviewer expectations, right? It's okay. Every interview में आपको कुछ ना कुछ learn करेगा, और it depends कि आप किस चीज में reject हो रहे हो, right? आपकी requirement क्या है? But I will say rejection is acceptable, but you have to appear in every interview so that you can eliminate all these rejections and you're leading yourself to perfection. Fine? Okay. But do practice. Let me tell you one thing. आप कपिल शर्मा शो देखते हो? पहले नवजोत सिंह सिद्धू was there, right? He used to present his शायरी, his ideas every time. Why? Because it was in his mind. As an aspirant, as the interviewer, try to learn every day a new word so that you can inculcate new words in your mind, and if it is there, definitely it will be delivered. So every day you have to spend something like 10 to 15 minutes based on your knowledge. Upgrade your knowledge, because that will help you. Ratification will not help you. You need to practice. Okay, the next question from Janvi. She asks, how can we deal with nervousness while giving an interview, or mentally, how can we prepare ourselves? Practice, practice, and practice, Janvi. It's very important. Practice mock interviews. You are a group of friends. आप उसमें एक ड्रामा क्रिएट करो, इंटरव्यूअर्स की तरह बिठाओ और प्रिटेंड करो आप एक मॉक इंटरव्यू दे रहे हो. आई एम टेलिंग यू, इट विल एलिमिनेट योर नर्वसनेस. और अभी कभी नर्वसनेस होती है ना, इट्स फाइन, नर्वसनेस इज फाइन. नर्वसनेस की वजह से आप और मेहनत करोगे. नर्वस होना अच्छी बात है. नर्वस को जब आप नेगेटिव लोगे, इट विल हैम्पर यू, इट विल ओवरकम यू. लेट द नर्वसनेस शुड बी देयर. ओके, नर्वसनेस होना इज फाइन, और उसका यही सोल्यूशन है, गिव मोर एंड मोर इंटरव्यूज. बेशक वो जॉब आपको नहीं भी चाहिए ना, गो फॉर एन इंटरव्यू. इट विल डेफिनेटली, आप इतने इंटरव्यूज दोगे, 50 इंटरव्यूज दोगे, आपकी नर्वसनेस चली जाएगी. दैट इज द ओनली रिजल्ट. गिव मोर एंड मोर इंटरव्यूज, योर नर्वसनेस विल बी एलिमिनेटेड. Yes, and other question. I know students practically बहुत प्रॉब्लम आता है इंटरव्यूज में, इतना आसान नहीं होता इंटरव्यूज. बट जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपना सीवी राइटिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी ये सारी चीजें को ऑर्गेनाइज रखना, इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू, ऑन द इंटरव्यूअर्स. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. आप अपनी तरफ से तो प्रिपरेशन करके जाओ, बाकी भगवान पे छोड़ो. डू योर बिट, डू योर हार्ड वर्क एंड प्ले इट स्मार्टली. As I told you, just browse about the interview locations one day prior. It's in Gurgaon or Noida. आपको कहाँ जाना पड़ेगा इंटरव्यूज के लिए. It is very hectic. Practically, it's very tough. Okay? और ऐसे इंटरव्यूज राउंड होते हैं बच्चे जहाँ पे आपको 6 to 7 hours वेट करना पड़ता है. So carry your lunch, your water bottle, everything with you. ये स्मॉल चीजें हैं, पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है. हाँ जी. So he asked a question that he was taking a coaching from some institutions, and there they guided him that the interviewer will trick yourself into a language question. कि मतलब he said कि जिस language में वो आपसे बात कर रहे हैं, like English, so they expect कि आप उसी language में उनसे बात कीजिए. You don't need to have to change your language, or you need to
You don't have to need to change your vocab. So can you highlight on this? सी इंटरव्यू राउंड में अगर आइस ब्रेकिंग सेशन के वक्त ही इंटरव्यूअर्स ये क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही आपको कंटिन्यू करना है, then it is mandatory, you have to use English language only, because there are many companies who are, after the globalization, they are outsourcing their work, and English is important, right? We need to understand this point. But if they are telling you in the ice breaking session that you have to use English, then you have to use it. And if it is a demand, you have to work on it. As I told you, every day try to inculcate new language, new words in your life, and make yourself perfectionist and perfect in that language. See, if you want to meet your goal, you need to practice for that. अगर आपको लग रहा है कि मेरा vocab, मेरा speech articulation, मेरा communication उतना strong नहीं है, then you need to make it. You can saw various YouTube tutorials, and you can, just browse few communication books, and you have to improve it at the end of the day. There's no other option, because English, yes, it is the demanded language, and you need to be confident in that. From today, इंस्टा पे अपने फोन के एप्स में डाउनलोड करिए, उस पर आप वर्क करिए, ओके, नॉट जस्ट अटेंडिंग दिस पीपीटी. आफ्टर माय पीपीटी डाउनलोड वेरियस एप्लीकेशंस जिसमें आपको एवरीडे, जैसे वाटर रिमाइंडर एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसी एवरीडे आपको एक न्यू वर्ड होगा. जस्ट सी, इनिशियली 30 डेज में आप 30 वर्ड्स यूज करोगे, 365 डेज में यू आर लर्निंग न्यू 365 वर्ड्स, एंड डेफिनेटली द मोर वर्ड्स इन योर माइंड यू विल यूज इट, and definitely your vocabulary will become more strong and biased, right? You need to do your self analysis. आप पूरे दिन में सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो. इंस्टाग्राम पे भी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है, so that in case you're browsing your Instagram, you're learning a new word related to communication, learn in that way. Learn in entertainment manner. जरूरी नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि 1 घंटा आप डेडिकेटली बैठ के पढ़ो. यूट्यूब के थ्रू लर्न करो, इंस्टाग्राम के थ्रू लर्न करो, फेसबुक पेजेस के थ्रू लर्न करो, right? Yes, Inderpreet, any other question? That's it, ma'am. I guess Okay. they liked your session very much. So, Thank you so much. Thank you so much. for your God bless valuable. you all. Have a lovely day and have a nice day. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your valuable and heartwarming session, which inspired all of us and especially our participants. Thank you. Pleasure. Pleasure is mine. Thank you so much. I thank all the participants as well as to be such a positive sport in that. Yeah, they are very good listeners. I really appreciate this. Listener. So with this, I would like to end the event with the hope to associate with you in many more future. Definitely, definitely. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Okay, students, now you can leave. Thank you.